students, Assalamu alaikum. As you know, the lesson under discussion is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. In today's lesson, we'll be discussing from para 2nd, page 6 of the 11th class text Hornbill. This portrait of a lady is written by Khushwant Singh. In the previous lesson, students, we read that when the writer came back from abroad after 5 years, grandmother met him at the station. Nada said that she did not look a day older. She embraced writer, and the writer could hear her reciting prayers. Writer also says that even on the first day of his arrival, even on the first day of his arrival, the happiest moments of grandmother were with sparrows, whom she fed. Writer also says grandmother did not pray on that evening, but she collected the women of the neighborhood, got an old drum that was damaged, in order to sing. She beat the damaged drum with hands for several hours and sang about the homecoming soldiers, homecoming fighters. Wright says we convinced her, we tried to sit off her and avoid tension, and this happened first time that she did not pray. It was about the last lesson, that is previous lesson. Now let's start from para 2nd, page 6. The next morning she was taken ill. It was mild fever, and the doctors told us that it would go. The next morning she was taken ill. वो बीमार पड़ी थी दूसरी मॉर्निंग. It was mild fever, हल्का सा बुखार था, लाइट बुखार था, and the doctor told us that it would go. डॉक्टर ने हमें कहा ये ठीक हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा ये बुखार. तो next morning she was taken ill, and it was light fever, and the doctor told us that it would go. This fever would go and she will be okay. But my grandfather thought differently. लेकिन जो मेरी दादी माँ थी वो अलग ही कुछ सोच रही थी. She told us that her end was near. और वो हमें उसने कहा कि उसके जो लास्ट मोमेंट्स हैं ज़िंदगी के वो बिल्कुल नज़दीक हैं. अब ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है. Now she is about to death. She is about to death. The death is she is now about to death. अब ज़िंदगी उसकी बहुत कम है, कुछ नज़दीक है, उसकी मौत नज़दीक है. She said that since only few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. और उसने हमें कहा कि since only few hours before, कुछ घंटे ही पहले ही उसका जो लास्ट चैप्टर है ऑफ हर जिंदगी का, she omitted to pray, she forgotten to pray. यानी ये कुछ ज़िंदगी के कुछ आवर्स ही जिसमें उन्होंने ग्रैंड मदर वो कह रही थी कि मैंने प्रे नहीं की, वो she forgotten, she omitted to pray. Now she was not going to waste any time talking to us. और अब उसने हमें कहा कि मैं आपके साथ और अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं अपना वक़्त सिर्फ प्रे में सर्व करना चाहती हूँ. So that is why she was not talking to us. We protested.
राइटर सेज वी प्रोटेस्टेड, दैट मीन्स हमने, राइटर उसके फादर और उसकी जो माँ है, राइटर की माँ, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वी अपोज इट, बट शी इग्नोर्ड our protest, but she did not care for our protests. उसने कोई केयर नहीं की, उसने हमारी जो हमने जो उसको अपोज किया, प्रोटेस्ट किया, बट उसने कोई केयर उसके बारे में नहीं किया. शी ले पीसफुली इन द बेड, बिल्कुल अमन से वो रही अपने बेड पर, एंड टेलिंग हर बीट्स, और नाउ शी वॉज टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. बट इसलिए वो अपने हिसाब से इबादत कर रही थी, बिकॉज वो सोच रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी की कुछ लम्हात बाकी है, उन लम्हातों में क्यों न मैं ज़िंदगी के इन लम्हात में प्रेयर करूं, अपने गॉड से मांगूं. तो किस तरह से ये अब दादी माँ सोच रही है. शी लेज पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. सो दैट्स वाई वो बिल्कुल अमन से, ठीक ठाक से उसने उस बिस्तरे पे, बेड पे रही, और वो क्या कर रही थी, वो इबादत अपने हिसाब से कर रही थी. नाउ शी वॉज टेलिंग हर बीट्स, वो अपनी उस रोज़री के बीट्स वो उसी के हिसाब से, नाउ शी वॉज टेलिंग हर बीट्स, शी वॉज एक्चुअली praying to God by using the beads of her this rosary. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. Even before we could suspect, हम ये डाउट करें, हम ये कुछ शक करें कि शायद अब ये शायद चली गई, इसके मरने के बारे में हमने शक किया. हर लिप्स स्टॉप्ड, उसके जो लिप्स हैं वो स्टॉप हो गई, वो अब प्रेयर नहीं कर रहे हैं, वो अब हिलना उन्होंने शुरू बंद कर दिया. एंड रोजली फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो तस्बीह उसके हाथ में थी, ऑन विच शी वॉज टेलिंग द बीड्स, सो दैट फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, जो उसके अब फिंगर्स जो थे जिनमें अब जान नहीं था, वो दैट फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. सो दैट मीन्स इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम ये डाउट करें, शक करें, सस्पेक्ट करें, हर लिप्स स्टॉप्ड, उसके जो होंठ हैं वो क्या शक करें कि वो शायद अब जाने वाली है, अब ये चली गई या इसकी मौत आ गई. हर लिप्स स्टॉप्ड, अचानक उसकी जो लिप्स हैं, होंठ हैं, वो रुक गई. मूविंग, उनका जो चलना, अब वो ये प्रेयर करना, वो अभी स्टॉप, दैट वाज नाउ स्टॉप्ड. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसके फिंगर्स जो हैं वो रोजरी उनके फिंगर्स से दैट फेल डाउन. A peaceful pallor spread on her face. A peaceful, एक अच्छा सा चेहरे पे उसकी एक बहुत अच्छी सी शक्ल आ गई. But it seemed to us it is lifeless face now. A peaceful, lifeless face appears, and we knew that she was dead. अब हमने समझ लिया कि now she was dead. उसका चेहरा जो चमक उठा, and her lips stopped moving, and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful color appears on her face. Her face becomes lifeless, and we know that now she is dead. Now, writer says that my grandmother is dead. Now she is no more. Now she goes to the heavenly abode. Now she is now no more. These were the words of the writer. we lifted her off the bed, and as is customary, that means as according to the customs, रिवाज के मुताबिक, we lifted her off the bed से हमने उसको उठाया, and that is customary, that is as per the custom, laid her on the ground, और उसको हमने ज़मीन पे रखा, and covered her with a red shroud, और उसको कवर किया एक रेड कपड़े से. red shroud means clothes that is cover for the dead body, that is the covering for the dead body. That means we lifted her off the bed,
as per the customs, and laid her on the ground and covered the dead body of my grandmother with a shroud, with a red shroud, with a cover, with a cover that is used for the dead bodies. After a few hours, कुछ घंटों के बाद ऑफ मॉर्निंग, दैट मीन्स जो ऑफ जो गम हमने किया, जो वी आफ्टर few hours of expressing the grief, we left her alone to make arrangements. हमने उसको थोड़ी देर के लिए अरेंज ये अकेला रखा, so that we may be able to make the arrangements for the funeral, for the lost, for the burning of the dead body, for the lost rites of the body. In the evening we went to her room. Now, in the evening we went to her room with a crude stretcher. In the evening, अब शाम का वक्त आ गया. We went to her room, हम उसके कमरे में चले गए. With a crude stretcher, एक simple stretcher को हाथ में लेके, to take her to be cremated, so that उसको ले जाए किसके लिए, cremated, for the burning of the body. उसकी बॉडी को जलाने के लिए हमने एक सिंपल सा स्ट्रेच लिया उसके कमरे में शाम के वक़्त. The sun was setting, अब सन डूब रहा था, and had it lit a room and veranda with a blaze of golden light, and had lit her room, और उसके उस कमरे को हमने रोशन किया, and veranda with a blaze of golden light, with the glow of a golden light. गोल्डन लाइट से हमने उसको वहाँ पे चमक उठा, उसके कमरे को वहाँ पे रोशनी दे दी. we stopped halfway in the courtyard. We stopped halfway in the courtyard के बीच में हम रुक गए. All over the veranda. Now what happened? Right, it says all over the veranda and her room, right up to her where she lay dead and still wrapped in her red shoulders, thousands of sparrows sat scattered on the floor. What happened? So this was something new. All over the veranda, उसकी जो veranda के इर्द गिर्द, and in the room right up to where she lay dead, और वहाँ in the end, और बिल्कुल वहाँ तक जहाँ तक उसकी जो बॉडी, जहाँ पे उसकी बॉडी थी, and stiff, rapid, and which was wrapped in the red shroud, in the red cloth, and that cloth was not flexible, that was inflexible, stiff wrapped. That means this cloth which was wrapped to the dead body, it was inflexible, it was hard, it was inflexible, and its color was red. Now what happened? Thousands of these sparrows sat. They were lying there on the floor. They covered the whole body. They were around this dead body. There was no stripping, so they were not making any sound. जब दादी माँ जिंदा थी, तो जब when she was feeding these sparrows, फिर क्या होता था, तो there was a stripping. One could hear the sound of the stripping of these sparrows. But now when grandmother is dead, they came and they were scattered on the floor. They sat scattered on the floor, but there was no stripping. Did not make any sort of this sound. कोई भी आवाज़, कोई भी stripping उनके वहाँ से नहीं आई. We felt sorry for the birds. And my father fetched some bread for them. बड़ा अफसोस हुआ इन बर्ड्स को देख के, इन स्पैरोज को देख के. मेरी माँ ने क्या किया? सी फैचड सम, कुछ फैच किया. फीड them with the bread for these sparrows. She feed these sparrows with the bread. She break this bread into little crumbs, into little small pieces. In the same way my grandmother was making this bread into small pieces. In the same way my mother make the small
or little crumbs, little small pieces, and feed to the sparrows. And threw it to them, and she threw these pieces to the sparrows. But what happened? Interesting है यहाँ पे. But what happened? The sparrows took to notice of the bread. उन्होंने इस bread के मतलब कोई did not notice, did not make notes of the bread. When we carried my grandmother's corpse up, जब हमने उठाया इस दादी माँ का उसकी जो डेड बॉडी है, they flew away, थोड़ा दूर चले गए हम. What happened? What we observed that they flew away quietly, वो बहुत दूर चले गए. Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और जो स्वीपर था नेक्स्ट डे, उस नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या किया राइटर कहता है कि नेक्स्ट डे जब स्वीपर आया उसने वो तमाम साफ़ किया, वो जो ब्रेड के पीसेस वहाँ पे पड़े हुए थे, और उसको किस में डाला, डस्टबिन में. ये दिस वाज ऑल, दैट मीन्स दिस वाज एक्चुअली द मॉर्निंग जो एक्सप्रेस उन्होंने किया दुख कि उन्होंने स्पैरोज़ ने, तो ये उन्होंने एक्सप्रेस किया दुख इस हिसाब से. इसका राइटर के कहने का मतलब ये है कि एक मैसेज है हमारे लिए कि कोई भी नेकी ज़ाया नहीं हो जाती है, चाहे हम किसी भी इंसान के साथ, किसी परिंदे के साथ, किसी हैवान के साथ किस तरह से भी नेकी करें और किस तरह से उनके साथ बिहेव करें, वो ज़ाया नहीं होती है. सो एक हमारे लिए एक नसीहत है, हमारे लिए एक ये एडवाइस है कि हमारी दादी माँ हमारे लिए उसके कितनी प्यारी होती है और उसका मोहब्बत हमारे लिए कितना होता है. हाउ मच शी loved us, how much our grandparents, whether it is grandmother, whether it is grandfather, how much they are loving us, and what is now our duty, and we have to treat them in a good manner. We should have the love of our grandparents, grandmother, grandfather, and we should love them from the core of our heart. This is the message from the lesson by the writer. Thank you very much.